दोगे where you are at MCQs and simulations for FAR 2 and even FAR 1 आपका हो चुका है क्या? बैकर के मटेरियल तो आपके जो मैंने आज एम एम फार वन का M3 और M4 ख़त्म किया, तो उनके MCQ सिम्स ख़त्म हुए आज. Now I have to start FAR 2. ठीक है. So what we are going to do, maybe today we will cover FAR 3 cash and cash equivalent. Maybe 1.5 hours में we will be able to wrap up. Tomorrow again we will do accounts receivable. So that's Thursday and Friday. So let's try to see कि अगर आप FAR 2 पे पहुंच पाते हो by end of this week. Because यहाँ से आपका है ना revenue recognition भी एंड इसके बाद यहाँ से आपके बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुरू हो रहे हैं. सो यू हैव टू बी टुगेदर विथ मी. यहाँ पर यू आर लैगिंग बिहाइंड, दैट्स ओके, क्योंकि थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्सेप्ट्स ही है. बट यहाँ पर वंस वी विल सी रेव रैक, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड वन. तो आपको साथ के साथ ही करना पड़ेगा. Same inventory, PP and the intangible assets, and then going into a debts and consolidation. So all advanced topics will be starting from next Monday. So what we will do, we will need a breathing space. So हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे cash and debtor by end of tomorrow, and then we will just hold to see कि आप कहाँ पर हो. Just make sure that you have MCQs and simulations done for this topics. क्योंकि अगर आप यहाँ पर पीछे हो गए ना, फिर आप सिर्फ कैचअप ही खेलते रहोगे, and then things will be tricky. And we don't want to rush because we are already on a schedule, so we are not lagging behind anywhere. सो विल मेक श्योर कि संडे तक आई एम गिविंग यू अ बाय आउट टाइम. लेकिन अगर आपको लगता है यू नीड कपल ऑफ मोर डेज देन इट्स आल्सो ओके. बट लेट्स जस्ट मेक श्योर बिफोर वी स्टार्ट रेवेन्यू एंड ऑल द एडवांस टॉपिक्स वी हैव बेसिक्स फुल्ली कवर्ड इन योर बैकर मटेरियल. I'll try, but like even though these modules are small, Becker, for instance, for M2, it has 21 MCQs and 5 simulations. M3 is 18 I MCQs know, and I 2 know. simulations. Yeah, it will be there. So let's just try. If not, then we will just hold for couple of days. क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि we are keep doing the topics और आप बैकर में पीछे हो and then we reach to a stage जहां पर आप confused हो जाओ कि आपको बैकर में चीजें समझ नहीं आ रही है, सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. So our target is to make sure कि by end of this Sunday we are on a track. If not, maybe हम 1 या 2 दिन को और buy करेंगे. But we don't want to rush into a things कि हम syllabus खत्म कर दे लेकिन आपका बैकर पेंडिंग रह जाए. Right. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं न्यू टॉपिक से. अ स्मॉल टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. वी आर इनटू अ फार 3 नाउ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसका डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड देन फॉलोड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल. सो बोथ दिस टॉपिक together should take around 2.5 to 3 hours of time, and not very complicated. Accounts receivable mein we have a certain calculations for bad debt provisions, and that's where your matching principle is again coming into a picture. तो हम लोग again उस पर बात करेंगे when we do it later in the day या early tomorrow. आज बात करते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे. सो व्हाट आर द कंटेंट इन दिस सिलेबस टू लर्न कि क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, and what items qualify as a cash and cash equivalent and what item go as the short term current assets. Then we will just do a bank reconciliation, and I have a couple of examples to practice to make sure that bank reconciliations are you are confident. So pretty straightforward topic, not much complications expected in this. पहले पीपीटी गो थ्रू कर लेते हैं, then we will go through बैकर, and then we will go through your couple of manual examples जो मैंने निकाले हैं, and then this chapter will be over. तो डेफिनेशन क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की? So any cash on hand, whether it's your currency notes or whether it's your coins or petty cash, or let's say your current accounts, your savings accounts, everything which you can expense out today, you can consume today, is your cash on hand. So cash on hand, number one, it's a part of cash and cash equivalent. Again, आपके coins हो सकता है, currency notes हो सकता है, your savings account, your current account, जहां पर कोई भी restriction नहीं है, you can do a transaction right now
It is called cash and cash equivalent. Second, money market funds. Now, money market funds are those instruments जो generally आप invest करते हो for up to 90 days, and the purposes could be different. For example, you want to go for a short-term hedging strategy, or let's say you have gone into a derivative money market funds, what your settlements are expected within 90 days. So again, it is called in cash and cash equivalents. So base क्या है cash and cash equivalent का? Whatever items which can be converted or consumed within 90 days of time where company has a control, they are called a cash and cash equivalent. So money market funds, if they are maturing within 90 days, it's a part of cash and cash equivalent. The third, unrestricted compensating balances. Now words are very important. It's unrestricted compensating balance. Now let's understand what is compensating balances. For example, let's say you have taken a bank loan from Bank of America for $10,000. Now bank has given you a loan subject to condition that at all time your average bank balance has to be $3,000, out of which $1,000 will be permanently restricted for 1 year period. 2,000 you can still use you want, but for the entire month your running average should again be $3,000. Now in this case there are two scenarios. Number one, I didn't understand. What? okay, चलिए फिर से चलते हैं. First of all, what is compensating balances? Compensating balance का मतलब ये होता है when you take a loan or a borrowings from a bank, bank asks you to maintain a certain bank balance in your savings account just to make sure that you have enough money available in case you default for your installment payment. So let's say you have taken a bank loan of $10,000 और बैंक ने आपको क्या बोला है कि at all time आपका जो एवरेज बैंक बैलेंस है वो $3,000 होना चाहिए. सो हो सकता है किसी दिन आपका बैंक बैलेंस है $50,000, किसी दिन है $30,000, किसी दिन है ओनली $300, किसी दिन है $3,000. But when you take a monthly average, the average number has to be at least $3,000. लेकिन बैंक ने इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस, वेरी कॉमन, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस. सो इफ यू आर सपोज्ड टू मेंटेन द बैलेंस इन योर सेविंग्स अकाउंट, इट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग बैलेंस, एंड दोस अकाउंट्स आर आल्सो कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब इसमें भी बैंक कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है. सो व्हाट बैंक कैन से दैट आपको $3,000 का कॉम्पनसेटिंग बैलेंस तो रखना है, आउट ऑफ विच $1,000 शुड बी अनटच्ड. मतलब आपका डेली मिनिमम बैलेंस तो $1,000 होना चाहिए, ऑन टॉप ऑफ विच आपको एवरेज बैलेंस 3,000 का मेंटेन करना है. मतलब क्या है? इन द सेम एग्जांपल, हमने $10,000 बोरो किए, किसी दिन मेरे पास $50,000 थे बैंक में, किसी दिन $30,000 थे, किसी दिन $1,500 थे, किसी दिन $2,500 थे. इन एनी केस में $1,000 से नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज दैट इज माई रिस्ट्रिक्टेड कैश बैलेंस, कि मैं $1,000 से नीचे का फंड मेंटेन नहीं कर सकता. हाउएवर I can have a 1,800, 2,100, 50,000, 80,000, 20,000 डेली बेसिस पे मेरे बैलेंस डिफरेंट हो सकते हैं, इन सच अ वे कि मेरा जो 30 डेज का एवरेज है, दैट एवरेज इज अगेन कमिंग एटलीस्ट टू $3,000. अगर ये कंडीशन है तो इसके दो पार्ट्स है. नंबर वन, 1,000 इज कॉल्ड अ लीगली रिस्ट्रिक्टेड बैलेंस जो मैं टच नहीं कर सकता, एंड 2,000 इज अनरिस्ट्रिक्टेड बैलेंस, मतलब आई कैन यूज द वे आई वांट, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरा जो डेली एवरेज है एट द एंड ऑफ द मंथ इट रिमेन्स टू अ टोटल ऑफ $3,000. तो अगर कोई चीज अनरेस्ट्रिक्टेड कॉम्पनसेटिंग बैलेंस का पार्ट है तो वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. लेकिन अगर कोई चीज आपका रिस्ट्रिक्टेड कॉम्पनसेटिंग बैलेंस है तो वो आपका करंट एसेट्स में फॉल होगा. व्हाई? बिकॉज जनरली आपका बोरोइंग्स होगा 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के लिए. तो जब तक आप आपका बोरोइंग रीपे नहीं करते, that $1,000 cannot be moved out of your savings account. So even though it's your cash in hand, you cannot use it because of the legal restriction. So even though it's a liquid asset, ideally you will not be able to use it within the 90 days of the time, and hence it will qualify as a other current asset and not cash and cash equivalent. Clear hai compensating balance? What is the theory and concept? It's a current asset or a non-current asset? डिपेंड्स कि मान लो आपका अगर 5 इयर्स का रिस्ट्रिक्शन है, नॉन करंट. अगर आपका 180 डेज का रिस्ट्रिक्शन है, इट्स करंट.
And how is this an asset and not a liability? because it's your money in your savings account. Okay. And the लायबिलिटी and, बोरोइंग्स है. So borrowings a- तो आपका ईएमआई के थ्रू पे आउट हो रहा है, राइट, इंस्टॉलमेंट के थ्रू. This is just a security deposit which you have put with the bank. and what's the thousand? Is that being classified differently? 1,000 is going to be a current asset, and 2,000, which is unrestricted, that will be a part of your cash and cash equivalent. Okay. क्लियर है. एक फ्यू एग्जांपल्स और देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या हो सकता है. यू कैन हैव अ बैंक चेक्स, सो चेक्स इन योर ड्रॉवर्स इन योर हैंड which you can encash whenever you want. Money orders, again a notes receivable kind of a note. Traveler's check. So all those things which you can encash right now if you want. So they are a cash and cash equivalent. Commercial papers and treasury bills, again up to 90 days of maturity is important, or a corporate deposits with original maturity of 90 days or less. So any investments basically you are doing, commercial paper, treasury bills, they are generally 30 days commercial paper, 45 days, treasury bills of 60 days, or a corporate deposit or a commercial deposit with original maturity of 90 days or less. This all forms part of your cash and cash equivalent. What's a However, commercial paper and CD? so commercial paper basically corporate issues. If for example, मेरा एक कंपनी है, मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा है. Now I want individuals to come and invest me. So I issue my debentures, I issue my bonds, I issue my commercial paper. So it's a kind of your debt agreement where a person will invest in your company and you will pay them maybe interest or a dividend or any scripts, uh, which will be your expense. सो कमर्शियल पेपर जनरली यूज फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैंक कभी लोन नहीं देगा फॉर 45 days 60 days. So you generally go in market and issue the commercial paper. It could be 0% commercial paper too. तो आप क्या बोल रहे हो कि I am going to issue $100 commercial paper today with 45 days of maturity, can be purchased at $75. तो आज आप इन्वेस्टर्स को बोल रहे हो कि मुझे $75 दो, मैं आपको 45 डेज के बाद $100 वापस करूंगा. So $25, which is the difference, is the interest earned by the investor or interest expense incurred by the company. And what's CD? It's kind of a same. It's a corporate deposits, you can say, commercial paper. So all are in the nature. Its names are different, but all are in the nature of the debt funds which are issued by the company. Okay. See, now, But like for instance, commercial paper, why is it not being considered a liability? so I'm giving you the concept. Here you are thinking from the investor's point of view. You are the company. You have invested in the commercial papers of the some company. You have invested in the treasury bills. You have invested in the CDs. So the concept I told you from the issuer's point of view. Here you are the investor. So I am the CPA. I have invested in the commercial paper of 45 days. So for me, it's a cash and cash equivalent. For the So company the which is issuing, it's a liability. so the company is basically buying a commercial paper of another company. Yes, exactly. They are basically investing. Okay. Now, what is not cash and cash equivalent? First thumb rule. Anything which is above 90 days, it's not a cash and cash equivalent. It's a current assets. Now, any corporate deposit, if it's issued for a longer term, it is not. Legally restricted compensating balance, it is not cash and cash equivalent. Any post-dated checks you receive, it's not a cash and cash equivalent because you cannot honor the check right now within 90 days of the term. So if you see here what we say, bank checks, money orders, or any other checks which are due today, they are cash and cash equivalent. But if I'm giving you a PDC, post-dated check after 7 months, it is not cash and cash equivalent. It is still your accounts receivable. IOU, maybe we can ignore. Once we go to a financial instrument, we will understand this in detail. But just understand right now something called IOU, not a demand deposit. This is kind of your long-term fixed deposits or a long-term investments, which is locked in by a certain regulations and accounting is different. तो जब हम instruments में जाएंगे तब इसको detail में understand करेंगे. But right now, just understand it is also not cash and cash equivalent.
तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। आपको सिमुलेशंस या एमसीक्यूज आ सकते हैं वेयर दे आर गोइंग टू आस्क यू 20 आइटम्स एंड यू जस्ट हैव टू क्लासिफाई whether an item can be considered as a cash and cash equivalent or not. Again, this is just an example list. You can be given any more scenarios, but आपका concept clear होना चाहिए. If something can be consumed within 90 days आपके control में है तो वो cash and cash equivalent है. If you cannot, then it is not cash and cash equivalents. ओके लेट्स सी, हमने जो अभी रिस्ट्रिक्टेड वर्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड कैश का कॉन्सेप्ट देखा, इट्स जनरली द सेम। यहाँ पर एक और स्लाइड है जस्ट डिफरेंटली उसकी। सो योर कैश कैन बी योर अनरिस्ट्रिक्टेड कैश, सो देयर इज नो लॉ नो रेगुलेशन, आपका खुद का पैसा है, यू कैन यूज वेर एवर यू वांट, और यू कैन हैव अ रिस्ट्रिक्टेड और अ अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो अगेन आपको देखना है कि उसका टर्म क्या है। इफ द टर्म इज लेस देन 90 डेज आपका रिस्ट्रिक्शन चला जाएगा, then it is still okay to classify cash and cash equivalent. लेकिन आपका restrictions नहीं जा रहा है and the restriction is up to 365 days, then it's a part of your current asset. If it's a long term restrictions, let's say 5 years तक आप locking balance नहीं हटा सकते हो, then it's your non current assets. चलिए एक एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। ओवर टू यू। एक बार इसको गो थ्रू कर लो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आइटम्स दी गई है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीजें आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर होगी और कौन सी चीजें कंसीडर नहीं होगी। Why is check to supplier in our balance? Aren't we losing money in it? सो लेट मी चेक एग्जांपल क्या बोल रहे हैं। यू हैव अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ 160 के अपने सप्लायर। हाँ, सो यू आर एडिंग बैक, दिस इज योर अकाउंट्स एज पर योर, सॉरी, बैलेंस एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स 1,60,000। नाउ आपने एक जो चेक है सप्लायर का $25,000 का, विच इज डेटेड ऑन 31 दिसंबर, लेकिन आपने सप्लायर को वो चेक दिया ही नहीं है। So now it is in your drawers. You have not started paying that amount to your supplier. तो supplier को check कब मिलेगा? 15 जनवरी को। So think from now supplier's point of view. वो अपने बैलेंस में कब इंक्लूड करेगा? 15th of January, जब उसके पास ये चेक मिलेगा। So right now this check is in my drawer. Tomorrow मैं इसको फाड़ के फेंक भी सकता हूँ. Nobody is going to stop me. So today $25,000 मेरे बैंक अकाउंट में है. I can use it to pay a supplier if I want. I can tone down the check or I can change the amount before 15th of January. मुझे चेक हैंड ओवर कब करना है? 15 जनवरी को। So till 15th of January, $25,000 is my unrestricted balance. I can use for any other purpose. So it falls apart within my cash and cash equivalent. Even in accrual basis? Even in accrual basis, क्योंकि आपका बैंक तो हिट नहीं हुआ है ना। So in next slide when we do a bank reconciliation, we have to understand this concept कि अगर आपने कोई चेक अपने ड्रॉवर में छोड़ दिया है, that doesn't mean कि आपने पेमेंट कर लिया है। Once you hand over your instrument to your vendor, then only it says कि आपने पेमेंट कर दिया है, item is in transit। लेकिन अगर कोई चीज मेरे ड्रॉवर में है, सपोज यू थिंक कि अगर आपको किसी को $100 पे करना है, यू से कि मैं आपको 15 जनवरी को करूंगा, आज आपने चेक बना दिया $100 का, बट यू कैन चेंज योर माइंड फ्रॉम 1 जनवरी टू 14 जनवरी, राइट? अगर आपको नहीं देना है तो आप नहीं दोगे उसको, बिकॉज आपका चेक आपके कंट्रोल में है, द मनी इज इन योर बैंक अकाउंट। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री कर दिया, दैट डजंट मीन कि आपने पेमेंट कर दिया है। Your payment will be done only and only when check is received by the supplier और supplier उसको बैंक में डिपॉजिट करेगा। NSF is something we are receiving or something we are giving? सो एनएसएफ का मतलब ये होता है कि आपने अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में एक कैश इनफ्लो की एंट्री पास की। फॉर एग्जांपल, आपके किसी कस्टमर ने आपको एक चेक दिया था $3,500 का, लेट्स से 24 दिसंबर को। आपने 24 दिसंबर को ये चेक डिपॉजिट कर लिया, तो आपने अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल।
लेकिन आपको 2 जनवरी को पता चला कि ये चेक बाउंस हो गया है, देयर वाज नो बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, एंड एनएसएफ का मतलब होता है कि नॉन सफिशिएंट फंड, द चेक हैज बाउंस्ड। तो अब जो आपने कैश इनफ्लो की एंट्री की है, दैट इज नॉट मनी अवेलेबल विथ यू एट ऑल, क्योंकि वो पैसा आपके बैंक में तो कभी आया ही नहीं है। सो हेंस यू रिड्यूस द वैल्यू from your cash balance to get the correct cash balance. Okay. ठीक है, क्लियर है? सो यू कैन बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन योर एग्जाम्स। क्लियर है दिस वन? Yes. चलिए, बैंक रिकंसिलेशंस पे चलने से पहले हम थोड़ा बहुत बुक देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, so it includes both currency and demand deposits with the bank or other financial institutions. It also includes the similar demand deposits. So anything demand deposits which can be withdrawn or can be added at any time without the penalty. So it forms a part of your cash and cash equivalent. Basically आपके ऊपर कोई भी restriction नहीं है उसको use करने के लिए. Now the cash equivalent is a broad term which includes short-term, highly liquid investments that are readily convertible into a cash and their maturity is so near, let's say 90 days or less, that they present a very small risk of change in value. This is the official definition of cash equivalent. So definition क्या बोलता है कि any short term highly liquid investment with original maturity of 90 days or less and the change in their value or the risk of change in the value is very small. For example, मेरा fixed deposit है $100 का, मे बी वो बढ़ के $101 होगा, मे बी अगर कुछ भी बुरा हो गया, फैड रेट्स कम हो गए तो मे बी $99 होगा. सो द चेंज इन द रिस्क इज वेरी वेरी स्मॉल. But let's say you have invested in the cryptos or let's say crude oils right now. So maybe even though they are a 90 days or a less investment, if you suspect that there is a big risk of the deviation in the value of your investment, then again it will be a part of your current assets and not the part of your cash equivalent. कैश इक्विवेलेंट का अगेन शॉर्ट मतलब क्या है, आपके पास जितना पैसा है आप उतना पैसा यूज कर सकते हो. $100 है, आप $100 का परचेस कर सकते हो, इट्स अ कैश इक्विवेलेंट. अगर आपको रिस्क है कि 90 डेज में वो $100 आपके $40 हो जाएंगे या $200 हो जाएंगे, सो इट्स योर करंट असेट्स, इट्स योर इन्वेस्टमेंट एंड नॉट कैश इक्विवेलेंट. एग्जांपल्स देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. करेंसी नोट्स, कॉइन्स, योर सेविंग्स अकाउंट्स, योर करंट अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स, deposit held as a compensating balance which are not legally restricted, any negotiable papers like your investments, your checks, your money orders, your commercial papers, your treasury bills, your certificate of deposits, all things which has a maturity of 90 days or less. What is not cash and cash equivalent? If you invest in any deposits which has the maturity of 90 days or more, or legally restricted compensating balances. So they are not part of your cash equivalents. You have to treat either current asset or a non-current asset. Now, presentation point of view, your cash can be restricted or unrestricted. So cash is classified as an unrestricted or a restricted. A restricted cash is the cash that has been set aside for a specific purpose. Now the restriction can be also internal restriction or a legal restriction. If it's an internal restrictions, then we are okay. We can still call it a cash equivalent. For example, board of directors ने decide किया out of $100 of cash balance, $20 is set aside for purchase of laptop. That is not a legal restriction. It is a cash equivalent. But let's say $100 का cash balance, a legal contract with the bank has said $10 cannot be used for the 600 days. So it becomes now non-current asset. Unrestricted cash is also used for your current operations. If restriction is associated with a current asset or a current liability, classify as a current asset but separate from the unrestricted cash. So from a presentation point of view, you show a restricted cash separately. If a restriction is associated with a non-current asset or a non-current liability, classify the cash item as a non-current asset, but again a separate line item as a separate disclosure from the other investment. So reader of the financial statements can get a good idea that what is the cash which is restricted in the current nature, restricted in the non-current nature.
What was this point? How Which point? the last one? Last. Where they can get a good idea of how are they doing that? So, for example, in your balance sheet, you start with the current asset, inventory, cash, and non-current asset, let's say PP&E. Third section, investments. Investments, you have two items. Number one, investment in real estate. Number two, restricted cash balance with a restriction above 365 days. So, separate presentation is required. You cannot club the restricted cash into any other long-term investments. Okay. Now, examples of restrictions. If any portion of cash and cash equivalent is contractually restricted because of the financing arrangement with the banks, it is called a restricted cash in the balance sheet. If any, this is important, if any portion of the cash and cash equivalent is restricted by the management, it should be reported as a restricted cash as a current or a long-term asset. However, this is a management restriction, hence it is not a high risk restriction. मैनेजमेंट कैन चेंज दैट डिसीजन लेटर ऑन कि फर्स्ट उन्होंने डिसाइड किया कि $100 में से $20 लैपटॉप के लिए यूज होंगे. Now, after 3 months, they find कि उनको liquidity crunch हो रहा है. So laptop purchase is not important. Now they change the decision by having a board meeting and they decide कि $20 का laptop अभी भूल जाता है. Let's use this money for our business operations. So management restrictions, they are not a high risk restrictions. A user of the financial statement should understand कि restriction by the management is a positive restriction. जिससे आपकी कंपनी पे कोई impact नहीं होने वाला है. But something is a contractually external restriction by a bank or a legal institution, that decision cannot be changed by the company on its own. When it's restricted by the management, it's not considered cash and cash equivalent. Still, it is not considered because आपका जो purpose है that is set aside. If, for example, on 31st December you decided कि 100 में से $20 future में use होंगे, let's say after 180 days. So on the date when you prepare the financial statements, it is not a cash and cash equivalent. But let's say after 120 days आपने आपका decision change किया. So when you prepare now your interim financials for quarter 1, in that particular quarter you can again reclassify that item as a cash and cash equivalent. Okay. चलिए एक बार एग्जांपल नंबर 1 देख लो. आई थिंक इट्स द सेम एग्जांपल. It's the same example. Yes, let's do a one quick exercise. यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आइटम्स है, राइट साइड पे आपका सोल्यूशन है. डोंट लुक एट द सोल्यूशन, ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेश्चन. आपको मल्टीपल लाइंस दिए गए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर अ आइटम इज अ कैश इक्विवेलेंट और नॉट. जस्ट पुट हियर यस और नो. एक बार सारा आइटम हो जाए तो एक बार हम इसको रिव्यू करते हैं. सो ओवर टू यू. The last one, right? Yeah. यस, द रो नंबर 38. Give me 1 minute, I'll be just back.
चलिए चलते हैं वन बाय वन. Checking account, is it your cash and cash equivalent? Yes. Simple savings account, Yes. petty cash, Yes. undeposited customer checks. I got this wrong. ठीक है, इसका एक बार देखते हैं. 90 days treasury bills, Yes. 6 months commercial deposits, No. compensating balance is legally restricted. No. Okay. Post dated check received from the customer 15th of January. No. ठीक है. NSF check written by the bank, No. money market funds, Yes. postage stamps. I got it wrong. ठीक है. Treasury bills Yes. with a maturity of 10th Feb, so it's less than 90 days. तो बाकी के दो जो येलो आइटम्स है उस पर बात करते हैं. अनडिपॉजिटेड कस्टमर चेक्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिपॉजिटेड कस्टमर चेक? We have received the check, but we haven't deposited it in the bank. Exactly, you have received the check, so is check in your control? Yes. So if you want to encash the check within 90 days, can you do it? Yes, but we don't know if it will bounce back. So that you cannot assume, right? So if bounce happens, that's a exceptional situation. When you do the business, you don't think that every check will bounce. Otherwise, तो हम लोग हर एक चीज को कैश अकाउंटिंग पे लेकर जाएंगे when cash is actually received. So we will assume on a good faith the check is going to be honored. If not, then that is an exceptional situation. लेकिन अगर आज आपको किसी कस्टमर ने एक चेक हैंड ओवर कर दिया है, इसका मतलब यू आर द लीगल ओनर ऑफ द चेक. यू कैन डिपॉजिट इट टुडे, यू कैन डू इट टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, whenever you want. So control of the check is with you. That means if you want to encash the check and use the money within 90 days, is it possible to do so? Yes. So it's a part of your cash and cash equivalent. So undeposited customer checks in your control, yes. Had it been a reverse situation that you have a supplier check in your drawer, that means still the money is with you. You have not given the check. So it is still your cash in hand. Your control is there over the cash. Once you hand over the check to the supplier, then it is no longer a part of your cash and cash equivalent, because then supplier controls it. When supplier wants to deposit the check, when supplier wants to enjoy that particular money. Postage stamp क्या होता है? It is one of the transaction which is generally used across the globe to use your couriers and postages. Basically, these are the legal stamp जो आप advance में purchase कर लेते हो, and then you consume this stamp as and when you want. So this is actually your prepaid expenses, just like your prepaid insurance. आपने $150 के advance stamp ले लिए. Now this advanced step will be used when you do a couriers and the future parcels and so on. So this is not cash in hand. This is already a prepaid expense for which expenses has been incurred. ठीक है, But except the situation आपको नहीं can दिया जाता है इतना complex item in exam. can I not sell these stamps?
जनरली कोई नहीं करता है. सो जनरली इफ यू आई टॉक अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन मार्केट में देयर इज अ रेवेन्यू स्टैम्प्स व्हिच आर इक्विवेलेंट टू दिस. So these are specifically used to ensure who is delivering the goods, whether the party is genuine, authenticity of the transaction. So you generally do not resell it. आप ये business में नहीं हो to resell. Otherwise, the Mm. same logic you can again use for your prepaid insurance. For example, आपने insurance ले लिया. Are you going to resell the policy? No. Still, you have an option like you can endow the policy to a third party by having a legal agreement. But generally, क्या आप वो करते हो? You do not do it. So again, when you do a simulations or a MCQ, you have to think from a rational perspective. कि a normal person what it he would do, not as if कि क्या क्या चीजें possible है, क्या क्या हो सकता है. बिकॉज इवेंट तो कुछ भी हो सकती है. लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने मॉर्गेज करके एक लोन लेके एक और पीपीएनडी ले लिया, बट यू डोंट नीड टू थिंक दैट कॉम्प्लिकेशंस व्हेन यू सॉल्व द इनसिक्योर सिमुलेशन. You have to treat as if it's a normal transaction, how a rational person will think about this transaction. Okay. ठीक है, क्लियर है. दिस इज ऑल अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अ स्मॉल टॉपिक. कोई भी डाउट इसमें? No. ठीक है. बैंक रिकंसिलेशंस कभी किया है आपने पहले इन योर कॉलेज, इन योर ग्रेजुएशंस? Mm, So what is bank reconciliation? we our account uh, doesn't match the bank statement. नहीं, that is not bank reconciliation. Reconciliations का मतलब क्या होता है? We are fixing the differences. No. Reconciliation का मतलब होता है you go from point one to point two. So for example, दो चीज जो common है, you have a two different sets of system. Now you try to reconcile from one point to another point. Let me give you a simple example. Suppose आपके कस्टमर ने आपको 10 इनवॉइसेस इशू की है. नाउ आपके जो इनवॉइस का टोटल है वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम से मैच नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स रिकंसाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसाइल? कि एक आपके पास पॉइंट ए है विच इज दी ऑल 10 इनवॉइसेस, एक आपके पास पॉइंट बी है. आइडियली ए इज इक्वल टू बी. अगर नहीं हो रहा है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम कैसे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन. Now, what is bank reconciliation? So, whatever amounts you receive or you pay, इसका एक तो accounting entry होता है which is in your books of accounts, whether it's a cash in, cash out, और एक एक्चुअल एंट्री होता है आपका रियल लाइफ बैंक अकाउंट्स में कि आपको क्या सच में पैसा मिला या नहीं मिला. लेट्स थिंक कि यू आर इन अ ईयर वन ऑफ द बिजनेस, आपके पास ओपनिंग बैलेंस जीरो है. नाउ लेट्स से ड्यूरिंग दी मंथ आपको $100 का एक चेक मिला, आपने $30 का एक पेमेंट किया एंड योर क्लोजिंग बैलेंस इज 70. So your 70 is a closing balance as per books of accounts has to match with your bank statement. अब बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे, यू विल सी कि क्या $100 की एंट्री है एज अ रिसिप्ट, यस ऑल गुड. क्या $30 की एंट्री है एज अ पेमेंट, यस ऑल गुड. योर बैंक इज रिकंसाइल्ड. पर लेट्स से ड्यूरिंग दी मंथ बैंक ने एक बैंक चार्ज डिडक्ट किया था $5 का, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है. Now your balance as per your books of accounts is $70, but balance as per the bank statement is $65. तो 70 से 65 के बीच में क्या है डिफरेंस? $5 का, the bank charges which we have not recorded. So the entry is called a reconciling entry, and ultimately you will bring your cash balance in your books of accounts again to $65, and now your bank is reconciled. Concept clear है? What is the bank reconciliation? Yes. अभी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बैंक रिकंसाइल नहीं हो सकता? जो नंबर वन मैंने आपको एक बोला कि सॉरी, बैंक चार्जेस जो बैंक ने डिडक्ट कर दिए, जो आपको पता ही नहीं थे, आपको स्टेटमेंट मिला उसके बाद पता चला. सो बैंक चार्जेस कुड बी द वन रीजन. लेट्स से अ बाउंस चेक. आपको एक कस्टमर ने $100 का पेमेंट किया था, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री कर ली $100 की, लेकिन वो चेक कभी पास ही नहीं हुआ. सो बैंक में वो एंट्री आई नहीं है. सो दैट कुड बी अ रिकंसाइलिंग डिफरेंस. और लेट्स से थर्ड रिकंसाइलिंग डिफरेंस, आपने $100 का एक चेक जो है वो रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन
एक्चुअल में ईयर एंड आ गया, चेक पास हुआ 2 दिन बाद, सो इट इज इन ट्रांजिट। आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया 31 दिसंबर को, बैंक में क्लियर हुआ 2 जनवरी को, सो इट्स अ टाइमिंग डिफरेंस। एज ऑन 31 दिसंबर आपके बैंक में नहीं आया, लेकिन 2 जनवरी को आ गया। और लेट्स से सेम आपने एक सप्लायर को चेक दिया $30 का 31 दिसंबर को, आपने बुक्स में तो एंट्री कर लिया, लेकिन बैंक में ये हिट हुआ लेट्स से 4 जनवरी को। सो ऑन 31 मार्च और बैंक बैलेंस डिड नॉट शो द एंट्री, बट 4 जनवरी को वो दिख गया, सो इट इज कॉल्ड आइटम्स इन ट्रांजिट। So these are the typical reasons where you can have a bank reconciliation differences. Clear है concept बैंक reconciliations क्या होते हैं? Okay. चलिए क्विकली गो थ्रू करते हैं और बैकर को। सो देयर आर टू टाइप ऑफ बैंक रिकंसिलिएशंस, वन फॉर्म इज कॉल्ड अ सिंपल रिकंसिलिएशन, अनदर फॉर्म इज अ रिकंसिलिएशन ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश डिसबर्समेंट। अगेन ये दोनों पुराने जमाने की बातें हैं। नाउ यू हैव ईआरपी सिस्टम्स अवेलेबल, एसएपी, ओरेकल, नेटस्ुइट, क्विकबुक्स, where all line items are getting reconciled. So every entry in your accounting system is reconciled with every item of your bank account. So we generally do a widely used form where rather than balances are getting tallied, we tally all the transactions, opening balance also and closing balance also. Now, what can be a components of a reconciliation? So what you are trying to do, you are trying to find out a difference between cash balance as per the bank and cash balance as per your accounting system. So the balance as per the bank statement versus balance as per your accounting system is called a reconciliation, जो आपको resolve करना चाहिए. Now what could be the reasons for the differences? Like I said, deposit in transit, आपने पैसा तो अपने accounting system में book कर लिया, लेकिन बैंक में year end के बाद deposit हुआ। और आउटस्टैंडिंग चेक, आपने तो अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में पैसा हटा दिया, लेकिन बैंक में वो पैसा निकला ईयर एंड के बाद। बैंक हैज चार्ज अ सर्टेन सर्विस फी, और बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड सम मनी व्हिच यू वर नॉट अवेयर, और आपको बैंक स्टेटमेंट में सीधा वो पैसा दिख गया जो आपने अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड्स नहीं किया था। और इट कुड बी द एरर्स, आपने एक पेमेंट किया $79 का, सो बैंक स्टेटमेंट में हिट हुआ $79, बट बाय मिस्टेक आपने अकाउंटिंग सिस्टम में उसको $97 से रिकॉर्ड कर लिया। इट्स अ टाइपिंग एरर, तो मे बी एरर्स कैन रिजल्ट इन अ डिफरेंसेस बिटवीन द रिकंसिलिएशन। अ बाउंस ऑफ द चेक, सो आपने तो पैसा रिकॉर्ड कर लिया कस्टमर से जो मिला था, लेकिन एक्चुअल में चेक बाउंस हो गया, सो बैंक में वो पैसा कभी आया ही नहीं, सो दैट कुड बी अ नॉन सफिशिएंट फंड्स। और इट कुड बी अ सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, आपको एक इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, अगेन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सो दिस ऑल कुड बी अ सैंपल रीजंस that why there can be a difference between balance as per your books of accounts and balance as per your bank statement. What we have to do, we have to reconcile the difference and make sure that balance matches between books of accounts and bank statement when we close our books. तो हमें स्टेप्स क्या करना है बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने के लिए? So you can go either way. Either you can start with balance as per bank and then go to a balance as per books of accounts, or you can start balance as per books of accounts and go balance as per bank. Either way it's okay. But generally हम लोग क्या करते हैं कि we pick up balance as per the bank. वहां पर हम लोग ऐड करते हैं या डिडक्ट करते हैं एनी ट्रांजिट आइटम्स, बिकॉज ट्रांजिट आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस इट इज नॉट क्लियर। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग वो ट्रांजेक्शन हटाते हैं जो डायरेक्टली बैंक में हिट हुए हैं, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं थे। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थियरी पे नहीं जाते, एक एग्जांपल करते हैं एंड व्हाट आई एम सेइंग विल बी वेरी क्लियर टू यू। लेट्स से देयर इज अ वन बैंक, Boor Bank company records a cash of $12,650 on November 30 year 3। तो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बैलेंस था? 12,650। सो लेट्स से बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड हियर यू हैव अ 12,650 का बैलेंस। नाउ जो आपने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बैंक स्टेटमेंट में आपको कैश बैलेंस कितना दिखा? यू फाइंड अ कैश बैलेंस ऑफ 10,050 ओनली। आपने कुछ ट्रांजैक्शंस देखे कि बैंक ने सर्विस चार्ज दिया है $10 का, एंड यू सी एक चेक जो था वो बाउंस हुआ है $90 का। कुछ डिपॉजिट थे इन ट्रांजिट्स $3,000 के, और चेक्स थे $500 के जो ईयर एंड के बाद क्लियर हुए बैंक में,
बट आपकी अकाउंटिंग सिस्टम ने उनको रिकॉर्ड कर लिया था. Now, how do you reconcile these items? Number one, first of all, let's find out what should be the right cash balance, and then let's find out what should be the right bank balance. So, number one, balance as per books of accounts. So, start with books of accounts concept here. So, you have a balance as per books of accounts 12,650. नाउ आपने एक एंट्री ले लिया था $90 का कैश रिसिट का जो चेक बाउंस हुआ. सो यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर बैंक सॉरी योर बैलेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय $90. बैंक ने एक $10 का सर्विस चार्ज भी लिया आपसे जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो यू विल फर्दर रिड्यूस योर बैलेंस बाय $10. सो आपका जो राइट बैलेंस है कैश जो रिपोर्ट होना चाहिए दैट कम्स टू 12,550. नाउ यू वांट टू मेक श्योर दैट दिस बैलेंस 12,550 मैचेस टू योर बैंक स्टेटमेंट. तो अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैसे निकालोगे? सो करंट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 10,050. नाउ बैंक ने तो ऑलरेडी सर्विस चार्ज हटा लिया है, बैंक ने तो $90 का रिसिट कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था. सो दिस 10,050 doesn't require any adjustment for service charge or NSF when we are trying to get adjusted bank balance. However, बैंक ने रिपोर्ट नहीं की थी 3,000 की एक डिपॉजिट और 500 का एक पेमेंट बिकॉज वो ट्रांजिट में थे जो ईयर एंड के बाद क्लियर हुए. सो फॉर द पर्पज ऑफ रिकंसिलेशन व्हाट वी विल डू, वी विल से कि बैंक में जो बैलेंस है 10,050 दैट्स नॉट अ ट्रू बैलेंस, इट्स अ टाइमिंग डिफरेंस. हमारा 3,000 का एक चेक है जो क्लियर हो चुका है बाय ईयर एंड 500 का एक पेमेंट है जो भी क्लियर हो चुका है. तो आइडियली मेरा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए 12,550. Now this 12,550 matches to my adjusted cash balance. So adjusted cash balance as per books of accounts is equal to adjusted cash balance as per the bank statement. And this is called your sample reconciliation statement. Deposits in transit are money that we are receiving. Deposit in transit means customer has given us the check, and outstanding check means we have given suppliers the check. Okay. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज अगेन अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जहां पर आप लोग सिर्फ बैलेंस को टाई करते हो. बट नाउ व्हाट इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ, अगेन इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट. इट्स अ रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज अ बैलेंस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट. वी चेक बिगिनिंग बैलेंस 12,550, यहाँ से आया इस क्वेश्चन से 12,550. सो वी हैव अ बिगिनिंग बैलेंस. नाउ लेट्स से दिसंबर में हमको कुछ रिसिट्स मिली, हमने कुछ पेमेंट्स किए, क्या वो चीजें मैच हो रही है दोनों सिस्टम्स के बीच में और या नहीं? इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड देन अगेन फाइनली हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस हमारा टाई करेगा बिटवीन बोथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड bank statement. So this is a more acceptable form of reconciliation now because we have a ERP system available. हमने क्या किया है इसमें? So we have a certain deposits of 12,950, notes collected by the bank, and let's say a bounce deposit 285. So total हमारे पास books of accounts में एंट्री गिरी 15,715 की, बैंक स्टेटमेंट में भी एंट्री थी 15,715 की. So all transactions are matched. हमने पेमेंट की है 5017 के, बैंक में भी हमने पेमेंट आइडेंटिफाई कर दी है 5017 के. ऑल ट्रांजैक्शंस आर मैच्ड, ओपनिंग मैच, रिसिट्स मैच, पेमेंट मैच. सो बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग बैलेंस आल्सो मैचेस. जस्ट अ फॉर्मेट, इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, बट दे हैव जस्ट इंडिकेटेड कि हाउ नाउअडेज रिकंसिलिएशंस आर टेकिंग प्लेस. क्लियर है यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन कैसे होता है? This officially ends your chapter. छोटा सा chapter था cash and cash equivalent. Bank reconciliation, I have 2 examples for you. On column A, right side पे मैंने उनका solution भी दिया है. Over to you. Quickly spend 10-15 minutes. इनको एक बार देख लो. कोई भी question है, we can come back and discuss on this. So over to you.
Your first answer is right. Balance is matching between both the systems, but second में match नहीं हो रहा है. Figure out करो कहाँ पर गलती हुई है. So company recorded a $540 payment as a 450. Disbursement is understated by 90. तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट होना चाहिए था 540, आपने रिकॉर्ड किया 450. तो आपको 90 का और पेमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू करेक्ट दैट एरर. It's a payment or are we receiving money? डिसबर्समेंट इज अंडरस्टेड. डिसबर्समेंट क्या होता है? डिसबर्स मतलब यू आर, इट्स आउटफ्लो, इट्स गोइंग आउट. Why 45? Because it's 45. Sorry. Why? So 90. Now it's matching between both the system. ठीक है, this is the highest level of complexity you can expect in the CPA exams. All clear with the concept of bank recon and cash equivalent? Yes. ठीक है, I think that is it. We will stop here. As I said, हमको rush नहीं करना है. We are done with cash and cash equivalent. Tomorrow and Friday we will close with AR. And up to you. Let's try by Sunday आप सारे MCQ and simulation जितने भी chapter से देख लो. Monday onwards we have advanced topics going on, तो आपको साथ के साथ ही करना पड़ेगा. Every topic will run for 2 days, maybe 3 days time as well. मुझे 3 MCQs डिस्कस करने थे और एग्जाम कब डिस्कस करना है? एग्जाम आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप मेरे को बताओ. इफ नॉट तो हम लोग फ्राइडे डिस्कस करते हैं. मैं F1 M4 के MCQs डिस्कस कर लेते हैं. 3 MCQs. आप स्क्रीन शेयर कीजिए. लेट्स सी. क्या है क्वेश्चन? एम कॉर्पोरेशन, M Mio Corp was a sole stockholder of the P Corp. On September 30th, Mio declared a property dividend of the company's 2000 outstanding stock at a $1 par value distributed to their shareholder. On that date, the book value was 1.5. Immediately after the distribution, the market value of the stock was 4.5 per share. What amount Mio report in its financial statement as a gain on disposal of the plastic stock? Okay. So now you have declared you were a sole shareholder of a one company जहां पर आपको $2000 के आउटस्टैंडिंग शेयर थे. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक? स्टॉक डिविडेंड का रेशियो क्या है? सो 2000 स्टॉक. सो आपको 3. ओके, आपको कंपनी ने एक स्टॉक डिविडेंड दिया. नाउ दिस इज नॉट इन अ कैश, तो आपके पास 2000 शेयर्स आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉक डिविडेंड. इसकी आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? 1.5 जब आपका स्टॉक डिविडेंड आपका इश्यू हुआ था. सो कैन आई से कि आपको जब इसका कैश इक्विवेलेंट डिविडेंड मिलता तो आपको कितना मिलता? 2000 इंटू 1.5. लेकिन कंपनी ने कैश की जगह स्टॉक में इश्यू किया. एक बार डिविडेंड इश्यू हो गया, उसके बाद मार्केट वैल्यू हो गया 4.5 एंड आपने इसको सेल आउट कर दिया. तो कैन आई से 4.5 इज योर सेलिंग प्राइस, 1.5 इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आपको पर शेयर $3 का गेन हुआ into number of shares जो आपको एज ए डिविडेंड मिले 2000. सो योर टोटल कैपिटल गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ द स्टॉक इज $6000. आपने क्यों $1000 लिया था? क्योंकि it's after the distribution, so the price market value, how is that relevant? मार्केट में ही आप बेचोगे ना स्टॉक को, आप कहाँ पर बेचोगे? नहीं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है स्टॉक पर शेयर की, तो वो तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं.
तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तब तो 1.5 है ना। थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक शेयर होल्डर हो, आपको 2000 कंपनी ने डिविडेंड्स दिए। अगर आप मार्केट में लेने जाते उस दिन पे तो आपको 1.5 में मिलता, बट कंपनी ने आपको कैश नहीं दिया, आपको इक्विवेलेंट डिविडेंड्स दिए। अब आपके पास स्टॉक आ चुके हैं। नाउ आपने 15 दिन के बाद डिसाइड किया कि आपके पास जो डिविडेंड में शेयर्स है वो शेयर्स को आपको बेचना है। तो आप जाओगे मार्केट में, यू विल सी कि आपके पास उस दिन क्या मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है $4.5। आपने 4.5 में इसको सेल आउट कर दिए। लेकिन आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 2000 शेयर्स जो आपको मिले एज ए डिविडेंड इंटू 1.5 जिस दिन पे डिविडेंड इश्यू हुआ था। सो योर नेट प्रॉफिट पर शेयर इज $3 per share into 2000 shares gives you $6,000 of net income. Mio is giving the stock dividend to itself. It's called Or S corporation. ये हम regulation में देखेंगे. It is allowed in US. here, the question I have is uh, the stock split. It's not done retrospectively. It's done after you do all these calculations. Then they do the stock split. स्टॉक स्प्लिट जिस दिन पे इश्यू हुआ है उस दिन पे कितने शेयर्स है उसके बेसिस पे होगा। तो आपके पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर है। एंड कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ 10% स्टॉक डिविडेंड, सो दैट 10% इज इंक्रीज्ड। उसके बाद कंपनी ने आपको 1 लाख शेयर्स दिए ऑन 30 जून, तो आपका वो 6 मंथ्स रह जाएगा। अगस्त पे री इश्यू हो गए, सो आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स के लिए हेल्ड नहीं हुए, सो दैट्स अ नेगेटिव नंबर। तो ऑन 30 नवंबर आपके पास कितने स्टॉक्स थे रियल लाइफ में? सो 3 लाख प्लस 30,000 एज अ स्टॉक डिविडेंड कम्स टू 3,30,000 प्लस 1 लाख 4,30,000 माइनस 50,000 कम्स टू 3,80,000। 3,80,000 जो आपके शेयर्स थे, आपने एक के सामने दो शेयर्स डिक्लेयर किए। सो यू जस्ट हैव टू डू अ स्टॉक स्प्लिट आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस। But we don't do at start. सॉरी, what you we don't do? The stock split at the start of the year, even though if it happens later. वी डू दैट्स अ कॉन्सेप्चुअली, लेकिन आपके पास कितने शेयर का स्प्लिट हुआ है वो तो 30 नवंबर को हुआ है ना। सो 1 जनवरी का आप इफेक्ट दे रहे हो। बट ऑन 1 जनवरी, डू यू नो दैट यू आर गोइंग टू परचेज 1 लाख शेयर्स इन जून? नो। डू यू नो आर यू गोइंग टू हैव अ ट्रेजरी स्टॉक ऑन 1 अगस्त? नो। डू यू नो यू विल गेट अ स्टॉक डिविडेंड? नो। So effect we are just giving as if it's done on the first of the day. लेकिन जो आप बेस लोगे वो बेस्ड ऑफ 30 नवंबर का लोगे ना, बिकॉज दैट डे यू एग्जैक्टली नो what is the common number of shares outstanding with you. And if, for instance, this question was in EPS and I was calculating the weighted average, then I हम्म would do the stock split in November, not at the start. आप इफेक्ट एट द स्टार्ट का ही दोगे। ये एग्जांपल भी आपका ये ईपीएस का ही है। No. व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो बेस यूज करोगे, क्या, लेट्स अगेन टेक योर एग्जांपल। आपके पास 1 जनवरी को 3 लाख शेयर है। डू यू नो ऑन 1 जनवरी की 1 नवंबर में आपको क्या स्टॉक स्प्लिट मिलने वाला है? नो। डू यू नो कि आप जून में कुछ परचेस करने वाले हो? नो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। सो ऑन 30 नवंबर वी विल टेक अ बेस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि 30 नवंबर को आपको पता लग चुका है कि आपके पास एग्जैक्टली कितने शेयर्स है जिनका स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। सो हम करेंगे इफेक्ट एज इफ इट इज डन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट का एज सच कोई रिलेवेंस नहीं है। आपका जो पहले 10 रुपए का शेयर था वो 5 रुपए का हो चुका है। सो योर टोटल इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। So hence you give the effect retrospectively. You are just changing the number of shares on hand with you because company has done their par value at 50% now. एक बार इसको आप स्क्रॉल करोगे, इसके सोल्यूशन में जाओगे, आई थिंक दे शुड हैव डन इन द सेम वे। So shares which were outstanding, so they were exactly the same. 30,000 stock dividend आप 100% लेते हो। ट्रेजरी शेयर्स पर शेयर्स ये यहाँ पर कैसे आ गया? ट्रेजरी शेयर्स परचेस्ड कहाँ पर आ गया? गो अप, यहाँ पर तो स्टॉक इश्यूड बोले हुए हैं आपको। No, it's purchased. Oh, sorry. Our bad, our bad. I think this is example from the company's point of view. So company has purchased the 1 lakh share back.
मतलब 1 लाख आर योर ट्रेजरी शेयर, एंड जो 1 लाख आ गए थे उसमें से आपने 50,000 री इश्यू किए. So 1 lakh shares were not with you for 6 months, and then 50,000 are again reissued for 5 months. And then you have done a stock split. I think आप मेरे को एक बार सोल्यूशन रेफर करके बताओ इसमें से कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आया हो. सी आपके पास 2,80,000 शेयर्स थे बिफोर स्टॉक स्प्लिट. आपने स्ट्रेट अवे इंटू टू किया है. यू हैव नॉट डन इंटू 2/12. यू हैव नॉट डन वेटेड एवरेज फॉर द स्टॉक स्प्लिट. आपने इसकी इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव पे ही दी है. रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी ये. रेट्रोस्पेक्टिव दी है, क्यों नहीं दी है? They do it at the end because I in my calculation I did the stock split at the start, दिखाइए but I आपका. got the wrong answer. दिखाइए आपका सोल्यूशन. लिखा है नहीं 630. I got 630,000. कैलकुलेट कीजिए अभी. Why it is done retrospectively, come down. उनके सोल्यूशन में आइए. Three आपका hundred 280 का thousand into two, 600,000 30,000 plus 2 से करिए plus thirty मल्टीप्लाई. thousand. Oh, sorry, उसको भी करिए. 600,000 into 10%. That is 60,000. 60,000 plus ट्रेजरी स्टॉक 600,000 को भी, ट्रेजरी स्टॉक को भी into minus. Why would I do treasury stock into two? आपका शेयर प्राइस तो कम हो गया ना बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट. पहले लेट्स अज्यूम 1 लाख शेयर एट $1 ईच थे, वैल्यू था $1 लाख. नाउ लेट्स से योर शेयर इज नाउ $2 ईच, तो आपके नंबर ऑफ शेयर आधे हो गए ना. आपका पार वैल्यू चेंज हो रहा है. But जो आपने uh, कुछ शेयर परचेस किए थे किसी से 1 लाख यूनिट के एट $1 ईच, अब उसकी वैल्यू आधी हो गई ना बिकॉज आपका पार वैल्यू इंक्रीज हो गया. तो आपके पास ट्रेजरी स्टॉक में अब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बट आपकी क्वांटिटी हाफ हो गई ना. एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कम टू सोल्यूशन. इन्होंने 2,80,000 के ऊपर इंटू टू किया है. तो 2,80,000 कैसे आया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ 3 लाख प्लस स्टॉक डिविडेंड माइनस ट्रेजरी स्टॉक प्लस ट्रेजरी स्टॉक, ये सब पे उन्होंने इंटू टू किया है. तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे इफेक्ट दो. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन से पहले जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सब पे आप इफेक्ट दो. So 280 okay, already includes all your transactions. So this is a retrospective effect. okay. I thought we only have to do it at the start. No, retrospective means ये ट्रांजैक्शन से पहले जो भी है आप उस सबको ठीक करो. और हमेशा याद रखो, स्टॉक स्प्लिट कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है. आपके पास 100 रुपीज का नोट है, मैं 50-50 के आपको दो दे रहा हूँ. I have given you a change. So stock split is nothing but a change. So your investment of 280 is still 280. It's just now आपका पर वैल्यू, पर शेयर वैल्यू कम हो गया है. योर इन्वेस्टमेंट इन टोटल इज सेम. पहले आपके पास $100 का एक करेंसी नोट था. नाउ यू हैव अ टू करेंसी नोट ऑफ $50 ईच. सो योर वैल्यू पर नोट हैज चेंज्ड, बट आपके पॉकेट में तो पहले भी $100 थे, आज भी $100 ही है. सो Okay, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक स्प्लिट. okay. Uh, I told you once that there was this bond with two percentages given. So this was बॉन्ड the को छोड़, question. बॉन्ड वी हैव नॉट डन येट. इसमें No, इफेक्टिव for इंटरेस्ट. EPS, they mentioned that the interest is at 9 and then it was issued at 10%. हाँ, तो आपको 10% लेना पड़ेगा, नॉट स्टेटेड रेट. सो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे बॉन्ड्स में. वी हैव टू ट्रीट इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर्मूला. अभी ये क्वेश्चन को छोड़ दो, ये कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको. Okay, that's it. दैट्स इट. सो गिव यू सम टाइम बैक. सिमुलेशन एमसीक्यू पे फोकस करो. कल एक और चैप्टर रैप अप करेंगे, एंड देन यू हैव अ एग्जाम ऑफ फार 2 एंड मे बी वॉट एवर वी कवर इन फार 3 सो फार इन दिस वीकेंड. Okay. ठीक है, चलिए. ऑल राइट, थैंक यू.